Hello everyone. So today we are here with the concept of matrices multiplication, and here we are going to discuss the rules of multiplication. We are going to discuss the properties associated with it, as well as we will be taking some examples to make you understand, right? So it's a very important topic for exam, and without this you won't be able to solve the questions for matrices, right? Almost in every question that we get in board exams we have multiplication of matrices. If this is clear, you're almost done with 50% of matrices. So we'll be completing with the rules, properties, and I said we will be taking from few examples as well, right? Now let's move on with this. So now let's start with the matrix multiplication by scalar, that is also known as scalar multiplication. So whenever you multiply any matrix with any integer, right? So then it is known as scalar multiplication. So what is a matrix if I simply ask you? So it's an array of numbers. What do you mean by arrays? Arrays means it's a rectangular array basically. The numbers the arranged in the form of rows and columns. And if I just take simple example, suppose this is a matrix. Mostly we represent matrix with capital A. Suppose I get a matrix 5 3 2 1. So the horizontal lines, how many horizontal lines you can see? Two. So there are two rows. This is R1 and this is R2. And this will be how many vertical rows? Two. So that will be C1 first row and the first column, and the second will be the second vertical line that you can see is the second column. So this is a matrix of the order 2 by 2. So first is always the number of rows and the second is always the number of columns. This is important. Okay, and this is known as the order of the matrix. What it is known as? Order. So order of any matrix is always the number of rows by number of columns. It's not multiplication, but yes, if you multiply 2 into 2, that is 4. 4 will be the total number of elements which are present in that matrix. Otherwise, it is spelled as 2 by 2 matrix, that is 2 rows 2 columns. The first number denotes the number of rows and the second denotes the number of columns, correct? So that's the simple thing that you have. Now if we multiply it by any integer, by any fraction, anything, right, any real number you can say, okay, then always it is going to be known as scalar multiplication. And how do you multiply this? Let's take the simple example of the above matrix only. Suppose the matrix is 5 3 2 1. Okay, now let's multiply it with some scalar, and that scalar is, suppose we have 2. Okay, so 5 3 2 1, right? So that is what we have. So now here we have to simply show that we have to multiply, right? So how do you multiply? We will be simply multiplying the corresponding elements, right? So we will be soon multiplying the corresponding elements. So now the corresponding elements are what? 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, सॉरी, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. व्हाट वी विल गेट? 10. 2 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट? 6. 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट? 4. 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट? 4. So now this is our matrix which we have multiplied with 2. That is 5 3 2 1. एक मैट्रिक्स था हमारे पास है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट? सो इफ आई टेक 2a, so that 2a will become what? Every element of the matrix will be multiplied by the number 2, correct? So if I simply give you a thing, that is what is ka means you are multiplying all the elements of the matrix with k. a11 a12 a21, आप सबको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? k से. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग. what you have negative है, सारे elements positive है, it's any number k that you are multiplying, then every element will multiply by that number, correct? So that is scalar multiplication. So k a का क्या मतलब है? That is we are multiplying each and every element by the k, by the scalar k. Okay, so that is what is this. Now let's come to the main conditions of the matrix multiplication, that is
multiplying one matrix by another matrix. करेक्ट. सो ए इंटू बी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई. हाउ विल यू गो विद इट? नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस बिफोर मूविंग ऑन टू दोस. नाउ the what are the conditions? The conditions are very important here. Without this you won't be able to do the question, students. So the number of columns in the first matrix must be equal to the number of rows in the second matrix. That is, in a matrix multiplication, what do you have? If matrix A is of order m by n and matrix B is of order p by q, then n must be equal to q. This is very important. I repeat again. आप ऑफ कोर्स जब और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आई रिपीट, if the order of the matrices is same, of course you can multiply those two matrices. But the matrix, if it is given that they have different order, you can still multiply them. But in particular cases, so what is that case? If the number of columns in the first matrix is equal to the number of rows in the second matrix, then you can multiply the two matrices. Suppose I take a matrix. Okay, let's take it. Now, what is this matrix? What's the order? How many horizontal rows? One. Okay, so one. How many columns are there? One, two, three. Three vertical lines we can draw, right? So three columns. So 1 by 3 is the order. Now we take another matrix. Okay, very simple thing. Now, how many horizontal lines you can draw? One, two, three. So three. And how many columns? Only one vertical line. Now, can we multiply these two matrices? Yes, because that's the first point. Number of columns in the first matrix must be equal to the number of rows in the second matrix. So this is what we have. So if I compare it with the above statement, this is m by n and this is p by q. So what condition I have highlighted? N must be equal to q. अगर ये ट्रू है then we can always multiply these two matrices, right? Of course ऑर्डर सेम है तब तो होगा ही सेम. 3/3 को आप 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2/2 को आप 2/2 से कर सकते हैं. बट अगर आपके पास डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कैन दे स्टिल बी मल्टीप्लाइड? यस, बट इन particular condition. What is that condition? Number of columns should be equal to number of rows. Correct? So A, B. A पहला मैट्रिक्स है, उसके कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए? सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. ओके, सो दैट इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल. नाउ व्हाट्स द सेकेंड पॉइंट आई हैव गिवन. अब ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो कौन से ऑर्डर का होगा? 1/3 ऑर्डर का होगा, 3/1 ऑर्डर का होगा, या कोई और नया ऑर्डर होगा? अब आप दो सेम मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग, तो ऑफ कोर्स द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल हैव द सेम ऑर्डर. But if you are multiplying two matrices of different orders, then what will be the order of the resultant matrix? That's what the question is. So that is the second point. The number of rows of the resultant matrix after multiplication must be equal to the number of rows in the first matrix in the order of multiplication, and the number of columns of the resultant matrix must be equal to that of the second matrix in the order of multiplication. Now that is m by q will be the order of the resultant matrix. Now m by q क्या मतलब है इसका? अगर आपके पास वही सेम जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का कंक्लूडिंग है, आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ऑर्डर m by n की, सेकेंड मैट्रिक्स है आपके पास ऑर्डर p by q की, then what will be the order of the resultant matrix? The resultant matrix will be of the order m by q. What is m? Number of rows in first matrix. What is q? Number of columns in second matrix. Always. तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था 1/3 × 3 ये एंड 3/1 का, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/1. सो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. कैसे आएगा ये जब हम सीख लेंगे मल्टीप्लिकेशन करना फिर करेंगे.
वन बाय वन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो वन बाय वन विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. सो दिस इज व्हाट द 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट. जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके जाएं, अगर सेम ऑर्डर है तो कोई नो वरीज, जो ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स का है वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आएगा, एंड दे कैन ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड ऑल्सो. But if the order is different, then what is the rule and what is the order of the resultant matrix? So these 2 points are very important, and I hope you both, all of you are clear with both the points. Correct? Now let's move on to the next. Let's take examples now. Let's learn how to multiply. Now 2 by 2 matrix multiplication का formula क्या है? We multiply the elements of each row of the first matrix by the elements of each column in the second matrix, element by element. Now let's take it 2 by 2. Let's take two matrices of 2 by 2. Okay, let's take another. Matrix कुछ भी हो सकता है students, doesn't matter. Okay, now let's take it. Now both the matrices as are given to you, they are of the order 2 by 2. तो हमारा जो result आएगा वो भी 2 by 2 आएगा. But here the point is first to learn how to multiply them. So multiplication formula हम learn करने वाले हैं, and I'll teach you in a very simple way. Okay, now let's go with it. तो पहले हम कहाँ से start करते हैं? We start with the elements of each row. Okay, so what is the first row here? 2. 2. दोनों elements same है. Okay, now let's take the first element. Let's talk about first two. Okay, or let's change the matrix so that it will be clear to you. Okay, it's fine. Okay, fine. Now let's take 2, 0. Okay, these are the two elements for the matrix. Now let's take it first row with the first column. Correct? First row with the first column and corresponding elements are to be multiplied. I repeat, first row will be multiplied with the elements of the first column of the second matrix and corresponding elements are to be multiplied. So first element क्या है हमारे पास 2, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1. सो 2 और 1 को हम मल्टीप्लाई करें. करेक्ट. सेकेंड रो में, सॉरी, सेकेंड एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का 0. तो 0 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब? सेकेंड एलिमेंट कॉलम के. तो 0/3, और दोनों को हम ऐड कर देंगे. जितने एलिमेंट्स होंगे रो में सबका एडिशन होना है. सो 2 into 1, 0 into 3, and then both will be added and they will give you the first element of the resultant matrix. This is AB or A cross B. Mostly we write AB. Correct? So first row will be multiplied with first column. So that will be the step 1. First row to be multiplied with first column. Correct? And corresponding elements are. So first element of first row with first element of the first column. Second element of the first row with the second element of the first column. अगर थर्ड होता तो थर्ड भी करते. ये तो अभी 2/2 है तो हम 2/2 का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म. So now the same row R1 will be multiplied with the second column elements corresponding again. Okay, so now 2 will be multiplied with 3 and 0 will be multiplied with 1. करेक्ट. सो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा और 0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया. व्हाट वी आर डूइंग इन स्टेप 2? वी आर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो with second column of second matrix. Again element by element. 0 को हमने 1 से किया, 2 को हमने 3 से किया, and then again we added. Okay, now let's close it because there is no other column. So first row को हमने C1 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे R1
इंटू C1 किया। दूसरे में केस में क्या किया, R1 इंटू C2 किया। अभी और कॉलम होते तो हम और ऐड करते जाते, बट अभी नहीं है हमारे पास कुछ भी। स्टॉप हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जब हम फर्स्ट रो में थे तो हम फर्स्ट रो को यूज कर रहे थे, अभी हम सेकेंड रो में जा रहे हैं तो सेकेंड रो को यूज करेंगे, सेम वे में यूज करेंगे। करेक्ट, दिस इज स्टेप 2, सॉरी। कैसे यूज करेंगे, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम। रिमेंबर अभी हम सेकेंड रो पे जा रहे हैं तो सेकेंड रो को यूज करेंगे। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग, इसका 3 और इसका 1, सो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 और उसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 3। सो वी आर मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग, नथिंग एल्स वी आर डूइंग। ओके, नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट एलिमेंट। करेक्ट, अभी यहाँ पे हमने सब हटा दिया, अभी हम सेकेंड रो पे ही हैं। करेक्ट, लेट मी राइट दिस फर्स्ट, नहीं तो आप लोग फिर भूल जाएंगे। करेक्ट, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, R2 को C1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या करा हमने, मल्टीप्लाइंग R2 विथ C1। ओके, नाउ हम R2 को अब किससे करेंगे मल्टीप्लाई, C2 से। वेरी गुड, दैट विल बी अवर फाइनल स्टेप इन 2/2। R2 को हम C2 से करेंगे। वेरी गुड। नाउ 3 को हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से करेंगे। सो नाउ मल्टीप्लाई R2 with C2 of second. Correct? Now we are going to forgive the final answer. So what will be the first element? 2 ones are 2, 0 threes are 0. So 2 plus 0, 2. 2 threes are 6, 0 plus 1, again 0. 3 ones are 3, 3 plus 3, कितना हो गया 6. 3 threes are 9 and 1 ones are 1. 9 plus 1 कितना हो गया. This is your AB. And this is how do we multiply in 4 steps. Okay, in 4 steps, the 2 by 2 order matrix. So first, I repeat, we multiply R1 with the corresponding C1 of the second matrix. Then R1 with C2. ओके, रिमेंबर, अब ये दोनों एलिमेंट्स किसके होंगे, जब तक R1 चल रहा है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी R1 चलता रहेगा। करेक्ट, ये दोनों किसके एलिमेंट्स हैं, R1 ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑल्सो। उसके बाद वी कम टू R2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी R2 शुरू हो जाएगा। सो R2 विथ C1 एंड R2 विथ C2, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑर्डर के elements. Correct? So this is how do we go for 2 by 2 order multiplication formula. So you have to just keep it in mind. Whatever is to be multiplied, that is important. AB पूछा है तो AB ही निकालना है, BA नहीं निकालना है, because matrix multiplication is not commutative. I write it here. Matrix multiplication कुछ केसेस में आ सकता है, बट दैट्स अ पर्टिकुलर केस, दैट्स नॉट द प्रॉपर्टी देन. ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. प्रॉपर्टी वो होती है जो हर केस के लिए होल्ड करे. इसका क्या मतलब है, नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी. दैट इज व्हाट वी मीन बाय नॉट कम्यूटेटिव. तो ए बी पूछा है तो ए बी निकालेंगे, पहले ए मैट्रिक्स बाद में बी. अगर बी ए पूछा होता तो हम बी ए निकालेंगे, पहले बी और ए विल बी द सेकेंड मैट्रिक्स. ओके, कुछ केस में इक्वल आ सकता है, बट दैट इज पर्टिकुलर केस. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ 3/3 का करना है. करेक्ट, प्रोसेस सिमिलर है. करेक्ट, बट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए और आपको भी समझ में आ जाएगा कि यस यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट. करेक्ट, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नाउ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आप अपनी चॉइस की भी ले सकते हैं, और व्हाट इट्स एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दैट आल्सो यू कैन टेक. करेक्ट, इट्स अप टू यू. इफ यू हैव अंडरस्टूड 2 by 2 well, you can move with 3 by 3 matrix of your own choice as well. Okay,
और अदरवाइज एक एग्जाम्पल आप देखिए और उसके बाद करिए, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे, थोड़े से जो पर्टिकुलर केसेस हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी जिससे आपको समझ में आए मैट्रिक्स की, वो हम इसके बाद लेंगे। बट पहले हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं। और अभी तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल भी बाकी है ना, 3 1/3 और 3/1 ऑर्डर वाला, वो भी हमें करना है, वो भी हम बाद में लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। So let's take A matrix as, let's take it in a simple way, 1 0 1 2 1 1 3 2 0. And let's take B matrix. Let's take this. Okay. Now we have to multiply these two matrices. So let's find AB. So AB means पहले आप A को consider करेंगे और बाद में आप B को consider करेंगे. Let's write the two matrices besides each other in the order that's needed. ठीक है। नाउ वी विल फॉलो द सेम रूल जो हमने 2/2 में लिया है, सेम रूल है। पहले हम क्या चूज करते हैं, R1 फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड वी मल्टीप्लाइड व्हाट वाज द स्टेप 1, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ओके, सो व्हाट इज योर स्टेप 1 हियर एज वेल, R1 to be multiplied with C1. I'm writing in short now. Okay, because now you know the corresponding elements. और जब हम ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं स्टेप 1 का, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है। ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट विथ थर्ड एलिमेंट। हो गया कंप्लीट, तो हमारा element be complete and we have ordered, correct, ordered, all is added together. Now let's come to second step. What is the second step, R1, जब तक R1 है तब तक R1 चलता रहेगा, कैसे, R1 with C2 now, करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी सेम रो का सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग, 1 with 1, 0 with 1 and 1 with 2। ये बन गया हमारा थर्ड, सॉरी सेकेंड एलिमेंट। अभी एक और कॉलम है, चलिए फिर एक और कॉलम कर लेते हैं, सेकेंड का हटा देते हैं। नाउ फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम, व्हाट्स योर स्टेप 3, R1 with C3, correct, so that is what you have. So let's make it, first with first, second with second, third with third। अभी ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि अभी आगे और कोई कॉलम ही नहीं है। So first row with first column, first row with second column, first row with third column, and we are done for the first row of the resultant matrix। अभी देखिए 3/3 को 3/3 से कर रहे हैं तो आंसर भी 3/3 के आने वाला है, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अभी हम चलते हैं सेकेंड रो पे, ठीक है। सेकेंड रो ये रहा हमारा, 2 1 1 का हमारे पास सेकेंड रो है। नाउ इस सेकेंड रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल बी आवर स्टेप 4, फर्स्ट रो को हमने किससे किया था, पहले फर्स्ट कॉलम से किया था, तो सेकेंड रो को भी किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। ओके, लेट्स टेक द करस्पॉन्डिंग। नाउ 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हम 3 से। 1 को किससे करेंगे, 2 से। 1 को किससे करेंगे, 3 से। करस्पॉन्डिंग 2 को 3 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, नाउ लेट्स मेक इट। नाउ step 5, R2 with C2, that will be your step 5, second row with second column and corresponding elements. So 2 will be multiplied with 1, 1 will be multiplied with 1,
and 1 will be multiplied with 2. That is what we have here. Correct? So that is what we have R2, C2. Now what will be the step 6? R2, C3. Very good. Now you have understood. कौन किसने बोला कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है. नाउ 2 by 1, 1 by 0 and 1 by 1. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ लेट्स मूव ऑन. सारे कॉलम्स खत्म हो गए अभी हमारे पास. अब हम थर्ड पे आ जाते हैं. सो थर्ड रो ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स आल्सो विल स्टार्ट. सब हटा देते हैं, अभी कुछ हाईलाइटेड नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड. नाउ थर्ड में क्या क्या है हमारे पास? 3, 2 और 0 है. इसीलिए हमने बड़े नंबर्स नहीं लिए थे, छोटे लिए थे, इससे कि हमें कैलकुलेशंस को सीखने में इजी हो जाए. नाउ स्टेप 7, R3, C1. करेक्ट. हमेशा C1 से मल्टीप्लाई होगा. लेट्स सी द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ C1 नाउ. Now let's multiply the corresponding elements. 3 into 3, 2 into 2 and 0 into 3. 0 आता है तो कितना अच्छा लगता है. Now let's move on to the next step. Step 8. R3 with C2. Correct? Now let's mark it. C2 क्या है हमारे पास? R3 तो कॉमन है. करेक्ट. So 3 with 1, 2 with 1, 0 with 2. Right? Now let's move on to the last step 9. Because 9 elements है ना हमारे पास. 2 by 2 में 4 थे तो उसमें 4 steps थे. यहाँ पे क्योंकि 9 elements हैं इसलिए 9 steps है हमारे पास. So let's do it now. Step 9. Step 9 what it says? R3 को C3 से multiply करना है. Now let's see the C3. 1 और R3 already marked है. So 3 into 1 corresponding elements. बस उतना ध्यान रखना है आपको. Now let's add all of these and get the answer. Now 1 into 3 plus 0 into 2 plus 1 into 3. So 3 plus 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6. Now 1 into 1, 0 into 1, 1 into 2. So कितना हो गया हमारे पास? 3. 1 into 1, 0 into 0, 1 into 1. कितना हो गया? 2. 6 to 8, 8 और 3, 11. 2, 1, 2. 2, 0, 1. 9, 4, 0. 3, 2. 3, 0, 0. So this is our resultant matrix, which is also of the same order as what we selected because the order of both the given matrix was same. So resultant matrix will be also of same order. So 2 by 2 था तो 2 by 2 आंसर आया, 3 by 3 था तो 3 by 3 आया. So that is what we have here. Is it clear to everyone? How to move on with the steps? If it's still not clear, put me on the comment box. I'll clear your doubts. You can message me personally as well. Ki this is the doubt where we are facing. I'll clear it. Okay, now let's move on to few more examples which will help you understanding few properties also. Right? तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी जो आपको बोला वो बोला था कि इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव. ओके, लेट्स ट्राई इट आउट कि सच में ऐसा होता है कि वो कम्यूटेटिव नहीं है. ओके, यू माइट बी वंडरिंग हाउ इज इट रियली पॉसिबल. यस, लेट्स सी इट. सो लेट्स टेक वन मैट्रिक्स ए. Any matrix which you want you can take. Let's take some negative term. Okay, and let's take B also. ओके, सो दिस इज वी आर टेकिंग टू शो कि कम्यूटेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है. हो सकता है हो इसमें, वी डोंट नो, वी हैव जस्ट रैंडमली टेकन इट, बट लेट्स वर्क इट आउट. ओके, सो फॉर दैट लेट्स फाइंड ए बी एंड बी ए बोथ इन दिस केस. ओके, क्योंकि तभी तो हमें पता लगेगा कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं. तो पहले ए बी निकालते हैं. ठीक है, हमारा पूरा अच्छे से हो जाएगा फिर मल्टीप्लिकेशन अगर आपने ये भी सही कर लिया. इट मीन्स यू आर परफेक्ट. आप रॉन्ग करेंगे ही नहीं और मैट्रिक्स के कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा फिर. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी. नाउ लेट्स टेल मी
What will be the step 1? Step 1 will be multiplying R1 with C1, right? Now you write it first and then I will write it. R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? C1 से करना है. आप मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए अपना आंसर. Are you getting the same which I am getting? पहले आप लोग लिख लीजिए, then I'll start writing. Okay, now let's do it. So now what we have? R1 into C1. So according to me, it should be 1 into 2 plus minus 1 into 1. R1 with C1, the corresponding elements. What will be the second element? You write it, then I'll start. So what will be the step 2? Step 2 is R1 with C2. Okay, now let's move on. So 1 with 1 and minus 1 with 0. Now, what will be the next step? R2 with C1. So this is your R2. So 2 into 2 plus 3 into 1. What will be the next? R2 with C2. Let's move it. 2 into 1 plus 3 into 0. So this is what the answer will be for AB. Let's make it out. 2 minus 1, 1. 1 minus 0, 1. 4 plus 3, 7. 2 plus 0, 2. So this is your AB. Check. Now let's find BA. तो पहले आप बी मैट्रिक्स को लिखेंगे अब. ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंस. रूल्स विल नॉट चेंज एनी हाउ. द ओनली द स्वैपिंग ऑफ द मैट्रिक्स. ए बी तो फर्स्ट ए आएगा. अभी बी ए बोला है तो पहले बी आएगा. नाउ लेट्स मेक इट. अगेन द सेम रूल्स विल फॉलो. R1 with C1. So 2 with 1 and 1 with 2. R1 with C2. 2 with minus 1 and 1 with 3. Then R2 with C1 and then R2 with C2. Now let's work it out. 2 plus 2, 4. Minus 2 plus 3, 1. 1 plus 0, 1. Minus 1 plus 0, minus 1. So if you see here, BA or AB matrix both are different. AB is what? 1, 1, 7, 2. BA is what? 4, 1, 1, minus 1. So AB is not equal to BA. So that is what we mean when we said that the matrix multiplication is not commutative. Correct? Second thing that we can do is, if you multiply any two numbers in arithmetic, then will their multiplication be ever zero? If the numbers are non-zero? No. कोई भी अगर हमें multiplication दो numbers का zero चाहिए, तो always one of the number has to be zero. Correct? But that is not true in matrices. If you have two non-zero matrices, their multiplication can still be 0. Let's take one example. That's a particular case, right? So let's do it and we will define our multiplication rules also with that. Okay, now let's take one matrix A. Correct. So that is also one of the properties. Ki multiplication of two non-zero matrix can be also 0. Let's take this 0, 2, 0, 0. Let's take another matrix B and now let's take it 1, 0, 0, 0. Now let's multiply it. So first row with first column. So 1 into 0, 0. 2 into 0, again 0. Let's multiply the first row with the second column. Of course, it's 0. So 0 into 0 plus 2 into 0. Then R2 with C1. Then R2 with C2. So what do you get? 0, 0, 0, 0. राइट. सो रैंडम एग्जाम्पल आई हैव टेकन. बहुत ईजी है बनाना. आपने थ्री जीरोस लिए, एक ही प्लेस पे रख दीजिए कुछ भी और फिर दूसरे में थ्री जीरोस, बट उस प्लेस पे वन आप टू नहीं रखेंगे या वन नहीं रखेंगे, किसी और प्लेस पे आप एक डिजिट रख दीजिए. यू कैन इंस्टेंटली मेक इट एन एग्जाम. करेक्ट. थ्री जीरोस वन नॉन जीरो, थ्री जीरोस वन नॉन जीरो, but the place of non-zero element should not be same in both the matrix. That's important. Okay, that's it. Now, so what's the property that you have? Multiplication of
two non-zero matrix can be a zero matrix. But that's a particular case. Okay, you can always say that. These are MCQs questions. Easily you can do it. Okay, now let's move on to the next. अभी जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था वो लेते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई. हमने एक मैट्रिक्स लिया था 3 2 1, और एक मैट्रिक्स हमने लिया था 3 2 1. ओके, बट द डिफरेंस वॉज दे हैड डिफरेंट ऑर्डर. फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या था हमारे पास 1/3, इसका ऑर्डर क्या था हमारे पास 3/1. एंड आवर चैलेंज वॉज कैन इट बी मल्टीप्लाइड. यस, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स. करेक्ट, ये हमारा रूल है, हम कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी मल्टीप्लाई इट. ओके, और हमारा ऑर्डर क्या आना चाहिए, देखिए, नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकेंड मैट्रिक्स. तो हमारा ऑर्डर 1/1. 1/1 का मतलब सिंगल एलिमेंट विल कम. ओके, 1/1 का क्या मतलब है, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट वाइडर. 1/1 means there will be only one element in the matrix. Now, what is the rule? You have to step one always, whether it's 2/2 or 3/3 or any matrix, multiply R1 with C1. Let's see. Now, this is your R1 and this is your C1. So, जब एक ही R1 और एक ही C1 है, so there will be only one step. And always this gives you what? This gives you the first element of the matrix. So, very simple. Right? So, 3 को हमने किससे multiply किया? 3 से. 2 को किससे multiply करेंगे? 2 से. This is simple 1 mark question. 1 को किससे multiply करेंगे? 1 से. अब कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम क्या करें? Only one step, because first row, total first row, full first row will be multiplied with first column to give first element of the resultant matrix. So what's your answer? 9 plus 4 plus 1, 14. That is your resultant matrix. So this was the first question that we had. Correct? हम different order की matrix को भी multiply कर सकते हैं. Right? So I hope you all have understood the multiplication. Different मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, 2/2, 3/3, and then if it's a different order, then the property it is not commutative, and the multiplication of two non-zero matrices can still be zero. Correct? So that is what we have here. I hope you all have understood the multiplication. Now let's take one more example. कौन सा लेना है, डिफरेंट का ले. ओके, डिफरेंट का लेते हैं, उसमें अब आप ऑर्डर भी बताइएगा. ये तो बहुत सिंपल था डिफरेंट का. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. थोड़ा सा हम लोग चैलेंजिंग थोड़ा सा ले लेते हैं, इससे वैल्यूज भी निकालनी होती हैं, जो 2 मार्क के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और 1 मार्क के भी. ओके, नाउ लेट्स टेक इट. वी हैव टू फाइंड एक्स. इसमें डिफरेंट ऑर्डर भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से. 1x1, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 1 3 2 2 5 1. We copy the question here because here is value of x. Okay, now 15 3 2 and 1 2 x, because otherwise you'll get a very weird answer if we just keep on doing it randomly. Okay, now अभी पहले हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों के ऑर्डर डिफरेंट है, और 0 का मतलब इट्स गोइंग टू बी अ 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जो रिजल्ट आएगा बन के. नाउ लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ ऑल द मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? 1/3. 1 रो है, 3 कॉलम्स है, 3/3. इसका ऑर्डर क्या है? 3 हॉरिजॉन्टल है और 1 कॉलम. करेक्ट. नाउ द पॉइंट हियर इज कि हमें पॉइंटर्स ऐसे रखने हैं कि वी कैन कीप ऑन मल्टीप्लाइंग. ओके, लेट्स डू इट. If we start with the first two matrix, can we multiply the first two matrix? Yes, because the number of columns in the first matrix should be equal to number of rows in the second. Okay, let's multiply it. So what will be the first step? R1 C1. So we are multiplying first row with first column. Okay, now let's make it 1 into 1, 2 into x, 15 into 1. Now we are multiplying first row with second column. ये हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी, ये हमारा चलता है हमेशा.
First row with first column, first row with second column, first row with third column. It continues. So 1 into 3, 5 into x, 3 into 1. Then first row with third column. Then what will you get? 2 into 1, x into 1, 2 into 1. अभी तो कोई रो है ही नहीं. So this is what we have on multiplying the first two matrices. Now this has to be multiplied with 1 to x. And this is 0. 0 का order अभी हम नहीं लिख रहे हैं because अभी we will multiply and then check what will be the order. जो भी आएगा वो order 0 matrix का हो जाएगा. Okay. Now let's see it. 1 plus 2x plus 15. So what will you get? 16 plus 2x. Next, 3 plus 5x plus 3. So what will you get? 6 plus 5x. 2 plus 2, 4 plus x. Correct? Now let's multiply it with 1, 2x. Now this is again one row and this is again one column. So only one step. R1, C1. Okay, that is what we have to do. So we will get a single one by one order again. जैसे हमने previous example लिया था, same example we have here. Now let's do it. Now 16 plus 2x will be multiplied with 1. So we'll get 16 plus 2x. 6 plus 5x, we are going to add all the terms. So 6 plus 5x, जब तक एक ही step चल रहा है तब तक add करते रहिए. Remember this, okay? So 6 plus 5x into 2, 4 plus x into x. And now we know this is going to be a simple zero matrix of 1 by 1 order again. Now let's add up all these terms and solve for x. And that will give you the values of x. Okay. Now 16 plus 2x plus 12 plus 10x plus 4x plus x square. राइट ना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि उससे हम क्या करेंगे वी कैन इक्वेट द एलिमेंट्स एंड सॉल्व द इक्वेशन करेक्ट सो नाउ व्हाट विल बी द अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस द बोथ साइड्स विल बी इक्वल लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड सो वी कैन टेक इट आउट ओके नाउ लेट्स मेक इट x square plus 10 4 16 plus 28. Now we have to do middle term splitting and all. So let's make it. So what will be the two numbers? Two numbers whose product is 28, right? Yes. And on addition you get 16. Very simple. 14 and 2. Now let's do the middle term splitting for the same. Okay, now let's do it here. So what do you get? X square plus 14x plus 2x plus 28 is 0. Now x plus 14 will be the one factor. X plus 2 will be the next factor. So what are the two values of x? Minus 2 and minus 14. So these are the two values possible for x. So these are very common questions which you get in exam. Don't get worried कि अरे ये तो multiplication सब different order है, we cannot multiply इसलिए answer 0 and no. We can multiply and we will get a finite values of x. So this was all about matrix multiplication. If you have any other query to ask for or any other type of questions, do message me and put it on the comment box or message me personally. Right? I hope you all have understood it. So please like, share and subscribe. Okay? Thank you everyone.